Good morning, everybody. Today we are discussing about reported speech. Reported speech is one of the important grammar point. We have to know how to change a direct speech in indirect speech or reported speech. Just look the example. Look at this example. My mother said, I am going to market. I am going to market is the actual saying of the mother. So this is direct speech. In the second example, my teacher says, you are my best student. So you are my best friend is the real language of the teacher. So both are in direct speech. Both these sentences are in direct speech. When we change this direct speech into indirect speech, or we can say it is a reported speech, that is the narration change. We can say it is a reported speech also. When we report somebody's actual saying in our own language, or we can say this is a indirect speech also, because somebody said something and we report it to somebody else. So let us start the discussion. My mother said, I am going to market. Here, when we change this direct speech to indirect speech, we have to write my mother said that she was going to market. Look, here is the change. My mother. Here the reporting verb is said, that means it is in the past form. So we have joined on a conjunction here. My mother said that. I pronoun changed into she. I refers to mother. That is why we have used the pronoun she. Am going present progressive changed into past progressive. She was going to market. And we have removed the inverted comma and the brackets. Simply we have kept the full stop as it is. It is a simple sentence. Look at the second example. My teacher said, my teacher says, you are my best student. The teacher says whom? It is not clear here. Suppose you will write my teacher says me that I am his best student. Best student.
My teacher says this is the reporting verb is in the present tense. So when the reporting verb is in the present tense, we never change the tense of the sentence. We keep the conjunction as usual, that my teacher says, we will write here, my teacher says me that I am his best student. There is no tense change. You are my best friend. You changed it into I am his best student. Simple present tense remains in simple present tense. Why? Because the reporting verb is in the present tense. Well, why do we change a direct speech into indirect speech, or you can say reporting speech? We have to make three changes. The first one is your tense change. Second one is your adverb change. Third one is your pronoun change. These three changes, when we change the direct speech into indirect speech, mainly three changes takes place. First one, tense change. Second one, adverb change. Third one, pronoun change. So what is tense change? The sentence which we change from direct speech to indirect speech. First of all, we have to look at the tense of that sentence. If the sentence tense is in the present tense, we have to change it into past tense. The rule is simple present changes into simple past. Present progressive change into past progressive. Present perfect changes into past perfect. Present perfect continuous changes into past perfect continuous. Simple past changes into past perfect. If the verb of that statement or sentence is in the simple past, having a main verb, action verb, then it will be past perfect. If there is a be verb, only be verb is there as a main verb, then it changes into simple past. Means simple past remains in simple past. For example, my mother said I was a girl at that time. My mother said that she was a girl at that time. Was it used as a
the verb remains in simple past. I think it is clear to you. Next, past progressive. Past continuous, we can say, changes into past perfect progression. Then another two tenses, like your past perfect and past perfect continuous, these two tenses, they do not change. Past perfect remains in past perfect. Past perfect continuous also remains in past perfect continuous. And we know there are only two tenses in English. One is present tense, another is past tense. Future is no tense, it is only a time, future time. So when there is any future time, reference is there. Will is there means we change it to would. Shall, we change it into should. Can, could, may, might, or any other modals are there means sometimes must changes into have to, and other modals remains as usual. Means there is no change in other modals. Only this will, shall, can, may, this changes into would, should, could, might. Most sometime, not always. Sometime we change it into have to. This is the tense change. Tense change, when we go for the tense change, we have to think about the sentence, that the direct speech, the sentence which is in the direct speech, what is the tense of that direct speech? For example, the gardener said, I have planted a I have planted a tree. First of all, look here. This portion, the gardener said, this is known as reporting clause. This is reporting clause. And this part, reported clause. Reported clause. Reporting clause, reported clause. The verb in the reporting clause here is said. And here in the reported clause, have planted. Said is in past tense because this is the past form of say or says. So when we change this reported clause, we have to remove this comma, this inverted comma, and as per the tense rule, we have to change the tense. Tense rule, just I have told that the simple present, if the reporting verb is in the past tense, then simple present changes into simple past. Present progressive, past progressive. Present perfect, past perfect. Present perfect continuous, past perfect continuous. Simple past, past perfect. If be verb is only there, then it remains in the simple past. Simple past. प्रति प्रकार परिवर्तन करा जाए. यदि simple past थिबा सेंटेंस रे यदि मेन वर्ब थाए, एक्शन वर्ब थाए, ताहले सेटा पास्ट परफेक्ट रे चेंज हुए. नहले यदि बी वर्ब थाए, जेमति मु माय मदर सेड,
I was a child at that time. I was a child means she was a child. We can हम ताको केवल पास्ट परफेक्ट न नहीं कि सिंपल पास्ट नहीं रखियो एटी रिपोर्टिंग वर्ब द गार्डनर सेड एटी पास्ट रे अछि जेतले हमें आको इनडायरेक्ट स्पीच बा रिपोर्टिंग स्पीच रे चेंज करिया आई हैव प्लांटेड ए ट्री प्रोनाउन चेंज हिसाब रे ही बा सी चेंज करिया ही बा सी have planted present perfect changes into past perfect have planted at so आपको जो तोला रिपोर्टिंग स्पीच रे चेंज करिबा द गार्डनर said that conjunction I have planted a tree. This is a statement. कितने हमको एडी that conjunction लगेगा पड़ेगा. That gardener he have planted had planted a tree. Have planted a tree. No comma, no inverted comma. Simple full stop last दिया है. We have to remember this. जेतवल मतलब direct speech रे there are two clauses. One is your reporting clause. Second one is your reported clause. मु कहली यदि reporting clause रे verb माने reporting verb past tense रे थिले reported clause रो tense change हुए किंतु आप मध्य देयर इज सर्टेन लिमिट कोन जेतले हमें रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस रे थिले मध्य हमरो रिपोर्टेड क्लॉज जदी गोटे ट्रुथ हेथिबो बा फैक्ट हेथिबो बा कौन सी गोटे साइंटिफिक ट्रुथ हेथिबो सेते बोले टेंस चेंज हबो नाही देखो एग्जांपल माय फादर said the earth revolves around the sun. The earth revolves around the sun. So this is a truth. जोड़ा आम गोटे फैक्ट बोली कहि परिबा. एडी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट रे अछि. एपटे रिवॉल्व्स सिंपल प्रेजेंट टेंस रे अछि. जेतबे आमे को रिपोर्टिंग स्पीच रे लिखिबा इनडायरेक्ट स्पीच लिखिबा माय फादर सेड दैट कने एटा स्टेटमेंट हेतिर कंजक्शन दैट लगेबा कॉमा रिमूव कर दबा देन इन्वर्टेड कॉमा भी हटे दबा एट कैपिटल लेटर मध्ये हटेबा रनिंग लेटर लिखिबा एठी द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन. It is a truth. No tense change. We cannot say the earth revolved around the sun. कहीं कौन पृथ्वी आज घूरुनी क्या घूर घूरुला ना कौन से इट इज ए ट्रुथ. सो देयर इज नो टेंस चेंज. से मैं कहली जिते रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस रे थाए जनरली आम रिपोर्टेड क्लॉज रो टेंस चेंज करूँ तार रूल अनुसार सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस
सिंपल पास्ट बा पास्ट सिंपल बेले बेले पास्ट सिंपल रहे जिते बी वर्ब मात्र मेन वर्ब यूज होता है जिते बड़े एक्शन वर्ब थाए सेटा सेते पास्ट परफेक्ट रे चेंज हो जाए राम सेड आई सॉ ए ट्रेन राम सेड दैट he had seen a train now saw changed into had seen simple past changed into past perfect Ram said that I was a student Ram said that he was a student कहीं बी वर्ब मुख्य वर्ब रूप मुख्य क्रिया रूप यूज होती जो आम रिपोर्टिंग वर्ब रे चेंज करवा से My father said that आमे लिखिया My father said that the earth revolves around the sun same thing there is no change the earth there is no tense change जो टेंस थिला तार मूल सेंटेंस रे सेम टेंस आम रिपोर्टेड स्पीच रे मध्य रखिबा नेक्स्ट कथा हला जतबळे माय फादर सेड बा माय फादर सेज बा माय फादर इज सेइंग बा माय फादर हैज सेड माने प्रेजेंट रो चारिटे जाक फॉर्म रे जदी हमर रिपोर्टिंग वर्ब रहिबो माय फादर सेज इज सेइंग हैज सेड हैज बीन सेइंग सेते बेले एपटे टेंस चेंज हबो नाही प्रेजेंट रे फॉर्म रे रहिले पास्ट रे तो जनरली हमर टेंस चेंज हबो तार गोटे लिमिट रहिला जदी ए स्टेटमेंट एपटे थिबा स्टेटमेंट माने रिपोर्टेड क्लॉज रे जदी सिंपल पास्ट टेंस थिबो बा पास्ट कंटीन्यूअस थिबो बा पास्ट परफेक्ट थिबो बा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस थिबो नियम अनुसार जेम चेंज होची से प्रकार चेंज हबो बा प्रेजेंट रे थिले से प्रकार चेंज हबो फ्यूचर जदी समय टाइम यूज करा हेची मु तो कहली चारिटा जिनस चेंज हबो विल थिले वुड शैल थिले शुड कैन थिले कुड मे थिले माइट बेले बेले मस्ट डा हैड टू रे चेंज हुए न सब क्षेत्र रे नुह किछिटा लिमिटेशन उपर रहिछि तार यूज हाउ अन्य मॉडल गुडा के एज यूजुअल रहे कारण फ्यूचर रो टाइम तागरे निश्चित रे कोनोसी वर्ब यूज होइछि फ्यूचर माने तागरे निश्चित गोटे मॉडल वर्ब यूज हेथिबो तने विल शैल किछि थिबो ताको आमे जनरली चेंज करिवा किंतु चेंज करिया से गोटे लिमिट तो मन रखिया पड़िबो जे जदि स्टेटमेंट फैक्ट हेथिबो ट्रुथ हेथिबो यूनिवर्सल ट्रुथ हेथिबो साइंटिफिक ट्रुथ हेथिबो बा मैथमेटिकल ट्रुथ हेथिबो ताको आमे केबे हेले टेंस चेंज करिवा नाही आमर सेकेंड चेंज मु जोड़ा कहूची फर्स्ट चेंज तो हला टेंस चेंज सेकेंड चेंज हला आमर एडवर्ब चेंज एडवर्ब कौन सी टाइम एडवर्ब हो पारे बा प्लेस एडवर्ब हो पारे टाइम एडवर्ब रे टुडे मन कर टुडे अच्छी आमे ताको चेंज करवा इनडायरेक्ट स्पीच रे टुडे टाको दैट डे टुडे दैट डे सेमती टुमोरो द फॉलोइंग डे बा द नेक्स्ट डे आमे आको चेंज करवा द फॉलोइंग डे बा द नेक्स्ट डे मते आको कहि परिबा
next day. Yesterday, the day before, but the previous day. Yesterday ta the day before likhi pariba, but the previous day kari pariba. Day before yesterday, 2 days before. Day after tomorrow, 2 days after. Generally now thile, generally jetole now thae, then আমি ইউজ করো। এগো থিলে বিফোর চেঞ্জ হুয়ে, এগোটা বিফোরে চেঞ্জ হুয়ে। দে ওন দ্য ম্যাচ 2 years ago. They had won the match 2 years before. Ago changes into before. Now then, place adverb jemti amaro here, there, hither, thither. ए प्रकार आमे जतो जगह एडवर्ब आसे चेंज करू। देखो गोटे एग्जांपल को, गोटे एग्जांपल लिखुची एडवर्ब चेंज रे ए प्रकार चेंज करियो। यू हैव टू चेंज लाइक दिस। माय ब्रदर said I am writing a letter now. I am writing a letter now. It is direct speech and present progressive. हमारा टेंस नियम अनुसार तुम्हें जानला I am writing changes into was writing. कहना प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बा प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस रे चेंज हबो। आई ब्रदर हेतिबारु ही हबो, प्रोनाउन चेंज हबो। कहना डायरेक्ट स्पीच रे सेना कहितनी आई एम राइटिंग, व्हेन वी रिपोर्ट इट सेतला हमें कहबा ही वाज राइटिंग ए लेटर नाउ देन ही वाज राइटिंग ए लेटर देन। सो माय ब्रदर सेड दैट आमे तळे ताको रिपोर्टिंग स्पीच रे चेंज करबा माय brother said that कमा उठेले दैट कंजक्शन लगेबा एटी आईटा हला ही एम राइटिंग हला वाज राइटिंग ए लेटर देन writing a letter then now को then रे चेंज आला। Simply the teacher said we are discussing grammar now. The teacher said that we change into they are discussing कुछ आमे कौन करिया we are discussing present continuous टा past continuous को जो they were discussing grammar then we are discussing grammar now. They were discussing grammar then से करे चेंज करिबा। ये हला तमरो टोटल लिस्ट ता तुम देखिबो मु लिस्ट ता छाड़ देबी एडवर्ब रो चेंज रो टोटल लिस्ट। सेमती थर्ड चेंज हला जेतो प्रोनाउन अछि प्रोनाउन गुडी को चेंज हो जेंती डायरेक्ट स्पीच रे आई आछि आई आइदर ही हे पारे यदि फेमिनिन जेंडर हेतिले सी हे पारे ही बा सी। जेमती राम सेड I have completed my work. Ram said that Rama
आई राम को बुझाऊँगी दैट वाज वाई से को आम चेंज करथिले ही Savitri said, I am the tallest girl of my class. Savitri said that she was the tallest girl in her class. My class, her class. So, I generally feminine gender heitile she habo, masculine gender heitile he habo. So, I ka refer करती तो अनुसार तार pronoun change हबो. सेमती we जति अच्छी थर्ड पर्सन रे दे my friend said we are going to market now. My friends said that they were going. We that they. सेमती you सिंगुलर मध्य प्लुराल रे मध्य यू दीट जाक यू सिंगुलर हेतिले ही बा सी हबो सिंगुलर हेतिले ही किंबा सी हबो प्लुराल हेतिले यू दे हबो द टीचर सेड टू अंकिता you are a good student. The teacher said Ankita that she was a good student. Tense rule अनुसारे you are a good student, she was a good student. Can reporting verb आमे past रे रखिछे said सेति में you singular हेतु she हला बा said to Ram you are my best student माने said to Ram that he was his best friend. So he. It he used the plural way. The teacher said, you all attend my class regularly. So the teacher said there, advised the students to attend all his classes. Advised the students to attend all his classes. It is a sentence tag. Imperative kubala. You all attend my class means advise advise the students to attend his classes करदेले आमे आगु सेटा आमे डिस्कशन करिबा एठी प्रोनाउन गुडी को आमे गोटे जिंस देखिले फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई बा प्लुरल वी फर्स्ट पर्सन रे दीटा जगह प्रोनाउन आई वी सेकंड पर्सन रे दीटा जगह प्रोनाउन जिंदे यू सिंगुलर यू बा प्लुरल यू जनरली सब थर्ड पर्सन को चेंज हुए ही बा सी बा दे हुए बेले बेले समटाइम सेकंड पर्सन बा थर्ड पर्सन प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन को मध्य चेंज हुए देखो he says I'm he says you are my best friend. He says to me, suppose to me, direct speech रे you are my best friend. कने एटा हीरो लैंग्वेज जतला हमें रिपोर्टिंग करिबा he says me that I am his best student. You एडी आई को रिवर्स हला you are my best friend बदल रे
आई एम हिज बेस्ट फ्रेंड आम कहले सेकेंड पर्सन आसला फर्स्ट पर्सन को मुझे जनरली रूल रे कहली ऑल द पर्सन्स pronouns of first person and second person both singular and plural generally change into third person as per the respective number singular हेतले singular number plural हेतले plural number रे change हुए किंतु एडी गोटे देखले आमे sometime it reverses it changes from the second person to first person or vice versa first person to second person और सेकेंड पर्सन टू थर्ड पर्सन समटाइम थर्ड पर्सन रू फर्स्ट पर्सन बा सेकेंड पर्सन रिवर्स मध्य सेंटेंस अनुसार हुए जनरली आम आज डिस्कशन रे जहाँ देखिले जड़े स्पीकर एक्चुअल लैंग्वेज होची जे स्पीकर तार एक्चुअल लैंग्वेज टा होची डायरेक्ट स्पीच सेटा जो आम आम निज लैंग्वेज रे अन्य को रिपोर्ट करुचे बा जनाऊे से आम रिपोर्टिंग स्पीच बा इनडायरेक्ट स्पीच बोली कहूचे जेमती मो माँ मते कहती तुम्हें होच मोर बा तू होच मोर भल पुओ My mother says to me, you are my best son. जब आम आपको दिस मदर प्रकृत लैंग्वेज होची यू आर माई बेस्ट सन जब आम मदर कौन कहती बोलिक जब आम अन्य को रिपोर्ट करुचे मो माँ मत कौन कहती आ क्या आम कहीपर मो माँ कहती तो हूँ मोर बेस्ट भल पुओ ताकू कहला से मत कहती जे मो हूँ भल पुओ से इनडायरेक्ट स्पीच वी कैनॉट से यू आर माई बेस्ट सन वी विल ऑलवेज से माई मदर सेज दैट आई एम हर बेस्ट सन जो अन्य लैंग्वेज में जो निजे लैंग्वेज रे चेंज करते सेटा ही रिपोर्टिंग स्पीच तार मेन तीन टा चेंज देखले आम टेंस प्रोनाउन एडवर्ब नेक्स्ट क्लास रे आम विभिन्न सेंटेंस अनुसार